All right. Good evening, everyone. Uh, First of all, so sorry for the delay yesterday and rescheduling it to today. Uh, I hope I'm audible to everyone. Just raise your hands if yes. All right, perfect. Good. So today is an introduction lecture where we see, we meet our entire cohort. We meet the mentor. We meet, you know, uh, each other, and we get to know about what is UX, what is UI, how are we going to progress throughout the course, how are we going to know move ahead and become a UI UX designer ultimately. Okay, so let me quickly start the presentation for you. Everyone can raise down their hands. I mean, raise down your hands, not raise again. All right. So we begin our lecture today. आज शायद हो सकता है, it can be a little monotonous, it can be a monologue also, but towards the end we'll definitely get started with the design bit also. So but before we do that, let's meet our entire cohort. Okay, let's have a brief introduction of each and everyone. So I'll call out your names, unmute yourself, and you can introduce yourself as to what do you do right now and why do you choose to get into UX. Yes, Ashish. Hello. So you have to introduce yourself as to what you do right now and what made you think about UI UX. So Ritik, since you don't have mic and uh, the the camera access, sorry, you can write it down in the chat. That's it. Ashish, please go ahead. Hello. Yeah, hi Ashish, tell me. Hello. Am I audible? Yes, you are. Hello. Good evening, everyone. So Yep. my name is Ashish, and I got to know about your course from my brother. So I found it interesting. So I thought about joining, and I've also like some little experience in UI UX because I used to do an internship. So I found it interesting. So I wanted to learn more about this. That's why I joined this course. And what do you do right now? I am currently doing job. Like it's not related to this. I'm Fine. doing other. But Yeah. what do you, Sorry. what do you do in the job? I work in a security agency right now. Like Okay, this is totally different from this. that's completely fine. Yeah. Yeah. Okay, cool. So we move ahead Thank next. you. Yeah, that's Aditya. Yeah, Aditya. So introduce yourself and why did you choose this course? I mean UI UX. So you don't have to explain why did you choose the course, but explain as to why UI UX. Aditya, please go ahead. Aditya, we can't hear you. If you're saying something, we can't hear you. All right. In the meantime, we'll go ahead, Aishwarya, if you can tell a little about yourself.
Aishwarya? Aishwarya, can you hear me? All right. Akshay Walia? Yeah, hi sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah. So my name is Akshay, and I am basically from Virar, which is located in Mumbai, Okay. and I am already a UI UX designer. Actually, And currently working currently working? working as a, in Malad Infintrix Global Limited. Okay. Okay. Fine. Fine. Cool. Uh, yeah, So I Aishwarya. have chosen so I Yeah, have please. chosen this course to get deeper into the UI UX design and brush up my knowledge Okay. more into UI UX. All right. All right. Cool. So we move ahead. So Aishwarya, you can write down in the chat. That's completely fine. Aditya, even you can write in the chat. Bhavika, you can also write in the chat. That's right. In the meantime, Anjana, if you can. Yes, hi, Sir Anjana. I've been working as a secretary in a preschool, but now completely thinking of changing my field into a job. So right now I'm not working, but to learn new thing, I found it interesting. So planning to learn UI UX designing. Okay. Cool, cool. Bhavika, she'll write in the chat. So next is Harshita. Hello, sir. Am I Uh, audible? yeah, Hello, good evening, everyone. My name is Harshita Prajapati. I just done my graduation from Thakur College, and I got to know about this course from my sister. yeah. But why did you choose UI UX? I mean, uh, everyone. Actually, sir, my mom is a graphic designer, Okay. so I want to do something in that only. So I Okay. decided about this. Okay. Great. Great. Cool. Cool. All right. Next, Maitri. Hello, I'm audible. Yeah, yeah. Okay, so my name is Maitri Parmar, and currently I'm pursuing S1 in psychology. So basically, I was interested in IT as well as in psych. So my study mentor suggested me to go with UI UX, and having a brief knowledge about that, I decided to go ahead and make up the career. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Mehul. Hello, am I audible? Yes. I am currently working as a web developer in WordPress internship. I decided to go with UI because first I was in front end development, but coding coding was not my forte. So I decided, and I used to love designing and Figma. So I decided to switch to UI. Okay. Okay. All right. Perfect. Go ahead. Hello. Hello, sir. Yeah. My name is Mohit. I'm coming from Rajasthan. I'm currently as a graphic design freelancer. Okay. Okay. And I also interested in UI UX, so I will join your classes. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Thank Uh, you. Nishu Walan. So Nishu, is that your pet name or your name is actually Nishu? Hello, I'm audible. Yeah, yeah, yeah. Okay, so hello everyone. Good evening. My name is Nishi Walan. Okay, Uh, Nishu. I have done my graduation from Bachelor of Science and Master of Science, but because creativity and design have always been at the core of my interest, so I decided to choose switch my career into the UI UX design. So recently, I have completed my basic course of Figma, Illustrator, and still learning Photoshop Basic,
and I'm not working. I just learning new things at home. Okay, okay, perfect. Pratham. So hi everyone, I'm Pratham Jesur. I'm currently in my third year of pursuing BSc IT from UPG College, and I chose UI UX because the field was interesting, and as we age now, every product or service is trying to become more and more user friendly. So UX is one way to go about that. Thank you. Okay. Ria. Hello, am I audible? Yeah, yeah. Yeah. Hello, everybody. Hello, sir. Good evening. So I'm Ria Vasani, and I have done my bachelor's in accounts and finance from KC College. So, as my mentor said, that it's more better to shift into UI UX. And I always, from beginning, I always wanted to go into the designing part, like anything but designing. But then, because of some reasons, I had to do back. So finally got a chance to shift into designing. So I got a good chance to get into UI UX. So yeah, that's a UI UX. Okay, okay, perfect. Rohan. Hello, am I audible? Yes, Rohan. Hello everyone. Pleased to meet you all. Hello, sir. My name is Rohan. I have done my bachelor's in automotive design from Ajinkya DY Patil University in Pune, and I'm currently working as a mobile applications designer here in Affinity X in Pune itself. It's an MNC, but the job here is kind of not of my taste, and have been delving more into UX and UI designs. So just recently did courses in Google UX design, and secured a few certificates from there. But then, of course, want to keep on learning and actually want to focus on a company switch. So that, and of course, yeah, want to make the world a better place by contributing my bit to it. So definitely, Good. thank Super you. interesting. Thank you, Rohan. Stuti. Hi, I'm Shruti Pandya. I'm currently a student studying IT in third year. So I've always been interested in designing and creativity. So I thought UI UX is a way to go. Okay, okay. Cool. So we'll just read out few others. So Ritik, he is a BCom graduate and right now is working as an admin assistant in Tata Memorial Hospital. Right. So okay. Cool. Aishwarya is currently working as a development developer, like a React.js developer. Bhavika, if you can mention as to what do you do and why are you choosing UI UX, so we can all know you. And also Aditya, if you can write down in the chat as to what do you do and why did you choose UI UX. So in the meantime, by the time they write, let's move ahead. Yeah, the mentor's introduction. I think everyone knows pretty well, but just a very small introduction that yes, I am Harsh Mehta and I have been in the industry for 12 years now, more than 12 years now, to be honest. And I started working, from a very younger age. So before I used to fix the computers, to be very honest, from the 8th standard. So I was a tech geek from a very early age. And then, I moved to IT in my college. And yeah, I mean, IT was always there in my blood, I would say. So I, by default, had to do something. Then I went to front end development because that really excited me. Because if you see, it's magical. You write like alphabets, and ultimately, what you get in return is the output, which is a visual. So that felt like magical thing to me. So I used to be a front-end developer, and in parallel, I also used to do the UX. So I was doing UX when even the term UI UX was not there. So previously, it was just the wireframes that we used to work on, right? And then the wireframes were then converted to the design and then to the development. So I've seen, the phase where there were no tools like Figma, XD. It was just Photoshop, Illustrator. So we used to do everything on
Photoshop was a good era again because the devices were less, so you know as to what you're designing for. Now the number of devices have increased, so you design for fit for every of the design device. Yeah. Then I mean I'm working with Leonine Studio, an agency, and I've been with them for 12 years. That's my first job and the job that I'm still there. So and I started this course to share my knowledge, share to the core what is UI UX. It is not a course to teach Figma. No, I'll be very honest. This course is not to teach Figma because there are lots and lots of tools, lots and lots of tutorials. Sorry, which are available online for free, paid, that can teach you Figma, how to use Figma. But using Figma does not make you a UI UX designer. Everyone. So the introduction is done. We are actually beginning with our lecture. That UI UX is not knowing Figma. First thing. So if you know the tools, does not mean you are a designer. I'll tell you a very small story. There was a photographer. Ek- uh, is everyone fine with English, by the way? It will be English in the both. Yeah. So there was a photographer, and he clicked really good pictures. So one day, one old lady invited her to a place, saying that you click really good pictures. Why don't you come out for dinner? Because that guy clicked a very good picture of that old lady. She was very happy. So what happened is that old lady, you know, she cooked a very nice meal. They both sat, had a good chat, everything. And then later, the old lady said that you click really good pictures. I'm sure that you must be having a very expensive camera. The guy was a little, like shocked. Like, where did this come from? And then he realized he finished his meal, and then later on, he said to the old lady that the meal was pretty good. I really enjoyed the meal. I'm sure that you must have a nice cooker or you must have a very nice utensil. That is where the lady understood that it is not about the tool. It is not about the utensils. It's not about the gas. It's not about the camera. It's about the skills that needs to be done, right? So that is what this course is about. This course is about developing the skills, knowing UI UX in and out, and it is not about Figma. क्योंकि अगर मैं Figma हटा दूं, अगर आप डिजाइन कर सकते हो, then you are a designer, right? Then you are a designer. एक फोटोग्राफर होता है, आप उसको एक नोकिया का 6600 भी दोगे ना, वो उससे भी अच्छी फोटो खींच के देगा. शायद ब्लर होगी, पर वो कैमरा का प्रॉब्लम. बट उसको प्रॉपर फ्रेम सेट करना, रूल ऑफ थर्ड यूज करना, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना, यूजिंग द बैकग्राउंड, यूजिंग द gutter space, using the space, everything that is part of the skill set, right? So हमारे केस में भी ऐसा ही है कि यूजिंग द स्किल सेट, the laws, the theories, the grids, the overall UI UX culture, that is more important than your tool. Okay. Now, the second most important. अगर किसी ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है, ये मान के कि इस कोर्स के तुरंत बाद आपको जॉब मिलेगी, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, ऐसा नहीं होगा. एंड अगर ऐसे कितने भी हैं, I'll tell you don't continue. I'll refund you the fees. ठीक है, but don't be under the impression कि आपको इस कोर्स के बाद तुरंत जॉब मिलेगा. नहीं. I'll tell you why. Because UI UX के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है. You don't need a degree for a UI UX designer. All you need is your portfolio. All you need is your portfolio. Why? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, इसके आंसर आप दे दोगे. लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है,
प्रैक्टिकली अगर आपका डिजाइन अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? तो वो बोलेगा कि इसको सिर्फ ज्ञान है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं है, ही डज नॉट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टफ। सो दैट इज व्हाई हमारा जब कोर्स खत्म होगा, यू विल हैव एवरी नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी बोथ। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ थियरी पता चला, बिकॉज द एंटायर कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे जहाँ पर हम प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, आपको थियोरिटिकल नॉलेज भी होगा, बट आई एम श्योर कि इस क्लासेस के दौरान आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसलिए आई हैव वन टू वन मेंटरशिप इवन पोस्ट लेक्चर्स, इवन पोस्ट द कोर्स। किसी को भी कोई भी इशू हो, even after the course is done, you are free to ping me anytime. You are free to call me anytime. ठीक है, ऐसा नहीं होगा that I'll say कि भाई कोर्स खत्म हो गया, अब अपना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, कला कला कला, ऐसा नहीं। You are always open to ping me. I'll always there to guide. I'm always there to guide. ठीक है, सो हो सकता है किसी को 3 महीने भी लगे पोर्टफोलियो बनाने में, हो सकता है कोई एक्चुअली कोर्स के दौरान ही अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट भी कर ले, well and good. ठीक है, but the whole point is don't be under the impression that you need XYZ degree for a UI UX designer, और ये कोर्स करने के बाद तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे गूगल की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, so like Rohan said, even he has lot of degrees, lot of certificates, but that is just for the interviewer to know that you have the knowledge of UI UX. Does not mean कि आप प्रो हो या आप मास्टर हो, वो आपको सिर्फ डिजाइन देख के ही पता चले। सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट, इसलिए मैं शायद थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ। Coming to the third point, most important, which is the sincerity. Throughout the course, everyone has to be very sincere, and not only that, even after the course, if you are getting into a field of UI UX designer, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे सब आता है। Even after 12 years, I cannot say मुझे सब आता है। उसका रीजन ये है, आपकी अपने स्किल सेट के हिसाब से आपकी कुछ एक मास्टरी होगी, कल जाके कोई और नई चीज आएगी जो आपने काम नहीं किया होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख लोगे वो भी, बट द पॉइंट इज आई स्टिल कैनॉट से, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए टूल्स आ गए हैं। ठीक है, 3D के लिए आ गए हैं, एनिमेशन के लिए आ गए हैं, जो मेरे अभी भी और सीखने बाकी है। सो आई कैनॉट से कि मैं 100% एकदम मास्टर हो चुका हूँ। क्या आई कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो इस वजह से ये कोर्स है, लेकिन नो वन इन द वर्ल्ड कैन से दैट अब मेरा हो गया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सीखूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी आर इन द फील्ड जहाँ पर आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, हर छोटी चीज सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा। रोज आपको एक पेज, एक सेक्शन, एक एक क्या बोलते हैं एक लाइन कुछ तो बनानी पड़ेगी, कुछ तो डिजाइन करना पड़ेगा। जब तक वो कंसिस्टेंसी, जब तक वो सिंसियरिटी नहीं होगी आपको, right, until and unless you design every single day at least something, you won't achieve that level जहां पर आपको easily जॉब मिल जाए, या you start getting freelance jobs. ठीक है, so without sincerity, without consistency, it is very difficult to build a portfolio. Mind it. मेरे फर्स्ट बैच के अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है जिनका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ सामने से कॉल करके, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज योर पोर्टफोलियो नॉट रेडी? तो बोलते हैं सर टाइम नहीं मिला, बनाया नहीं। सो इफ यू आर नॉट सिंसियर, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। अगर पोर्टफोलियो नहीं बनेगा तो जॉब उतना ही डिले होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि कोर्स के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। Anyone, any doubts? Anyone?
You can raise your hands and I'll call No, out sir. the names. Now, all right. So we move ahead. So what is UI UX? अपने अपने हिसाब से सब लिख सकते हैं चैट में. What is UI UX? So everyone knows. I'll give 2 minutes. अपने हिसाब से just write it down. What is UI UX? बाकी लोग भी अपने हिसाब से explanations लिख सकते हैं in the chat. What is UI UX? Okay. Others? आप 17 है. हाँ, okay. Experience about. Okay. 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 Others? Riya, Stuti, Maitri. Okay. Mhm. All right. Super. So, majority of the answers are कि UI is user interface and UX is user experience. जो user feel करता है app use करने के बाद या website use करने. Let me tell you, ठीक है? You guys are right. Experience means जो feel करता है, जो user feel करता है, ठीक है? मैं अगर Apple use कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें थोड़े बहुत animations आते हैं. The way the things are laid out, there's no back button in the phone. It's always on the screen. That's an experience. Whereas if you see Android, there is a back button for the phone also, right? In the Apple, you use gestures for back. Even in Android, you do, but there's a prominent button also. But at the same time, okay, if you see this, the user experience is how a user interacts. Interaction is all about experience. आपको कभी किसी ने बताया कि फ्रिज कैसे यूज करना है? नहीं, मैनुअल तो देते हैं वो, बट कभी किसी ने बताया नहीं फ्रिज कैसे यूज करना. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आपको कभी किसी ने बताया व्हाट्सएप यूज कैसे करना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टिक, टू टिक, ब्लू टिक? नहीं, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फेसबुक का कभी कोई हमने ट्यूटोरियल टूर देखा? नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज वो सारे प्रोडक्ट. इंस्टाग्राम हाईएस्ट यूज. कभी सोचा है कैसे उसका ये वर्क करता है, कैसे रील आया, ये आया, वो आया, रील बनाना कैसे है, कभी देखा? So imagine the level of you know experience. Just give me a second. Just give me a second. Sorry.
Alright, so sorry. Food urgent था, so I had sorry. Yeah. So experiences when you don't have to explain things to someone, they know it, right? So और फिर फ्रिज भले कैसा भी दिखता है वो सेकेंडरी है. The first important thing is वो ठंडा करना चाहिए. Correct? फोन है तो उसमें बेसिक फोन तो होना चाहिए, वो आपको ढूंढने में नहीं आना चाहिए. You are not supposed to find it as to what do I do with this. Huh? Then that's a problem. जो हुआ था विंडोज के फोन में, people got confused with the entire metro theme. I don't know आप लोगों में से कितना जन ने देखा है, बट किसी दिन गूगल करना, ये विंडोज का भी फोन था. It had metro theme and it was so confusing that people got lost कि यार इसमें कॉल कैसे करें, इस पे फोटो कैसे क्लिक करें, इस पे कैसे करें ना everything. So that is the experience. UI is a secondary part of it. So if you see the experience, imagine we never noticed this as a user. Yes, I was talking about Windows Zoom here. Correct. So if you see, you know, this small thing which is called as the navigation. Okay. So if you see, this is very small thing, you know, a navigation, but this defines a product. अगर navigation सही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट बहुत डिफिकल्ट है चलना. So if you see different sort of navigations, you know, तो navigation में अगर देखो एक कॉमन चीज है, सबके लोगो लेफ्ट में. Why? Because a user always subconsciously looks from left to right. Because सऊदी वाले हैं वो, मतलब जो अरब कंट्रीज है वो राइट टू लेफ्ट देखते हैं. That's a use case. And majority of them they go from left to right. So इसलिए हमेशा लोगो लेफ्ट में रखा जाता है. Okay. फिर उसके बाद if you see, the search is always prominent when the website or the product is demanding a search as prominent action. You know, e-commerce website अगर हम देखें, then a search is very important. Social media search is very important. Correct? Informative पे शायद नहीं, because आप वहाँ देखे search क्या करो. Correct? So at the same time, if you see mobile, now this is the behavior. ये जो frequently used actions है वो सारे नीचे है. क्यों? Because that's closer to the thumb. पहले क्या होता था, पहले कोई नीचे navigation bar नहीं होता. People used to have the hamburger on the top, which is this, right? तो वो hamburger जो मेन्यू है वो ओपन करने के बाद वहां से एक स्लाइड होता था, फिर लोग उस पर क्लिक करते. फिर इम्प्रोवाइजेशन हुआ एंड देन वी नाउ हैव अ बॉटम बार जहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है या फिर जो मेन है चीज है वो हम वहाँ पे देखते हैं. एंड जब वो हम देखते हैं, वी नो कि ये चीज तो प्रायोरिटी की है, उसके अलावा अगर कुछ और चाहिए तो फिर हम हैमबर्गर में सकते हैं. करेक्ट. सो व्हाई दिस? सो नाउ दिस इज अ यूजर बिहेवियर. यूजर जब मोबाइल पे देखता है चीजें इट्स डिफरेंट, और यूजर जब डेस्कटॉप पे देखता है द बिहेवियर ऑफ द यूजर इज डिफरेंट. बट एट द सेम टाइम the core behavior of the user does not change, right? So that's why the way they shop in real life is exactly the same how they shop online, right? So इसलिए अगर आप देखो तो इतने सारे रिटर्न्स क्यों होते हैं ना क्लोथ्स में, हाईएस्ट होते हैं शूज में. व्हाई? बिकॉज कुछ चीजें आप एक्चुअली जब उसको फील करते हो, देखते हो, यूज करते हो, थोड़ी समझ में, राइट? ऐसे समझ में नहीं. So this is just one example of experience which we never notice as a user. And if you also notice, all the action items are always on the right side of the navigation bar or anything. Even for any of the screen, the action items are always on the right. So if you see this also, the last screen, the action items are on the right. यहाँ पर भी अगर देखो लाइब्रेरी वाला जो screen है, action items are on the right. Moving ahead, as I said, the design is like a refrigerator.
When it works, no one notices. But when it does not, everyone does. Because it starts thinking. So जब तक सब कुछ चल रहा है, मतलब मान लो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अगर नहीं चल रहा है, अगर people are facing an issues, तो मान लो कि भाई कुछ तो गड़बड़। अब ये सब अचीव किससे होता है? सो यूएक्स लॉज से, है ना, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बिहेवियरल साइंस के लॉज है बहुत सारे, जो हम आगे जाके डिटेल में अगेन देखेंगे। एंड दिस इज व्हाट ऑल थिंग्स वी विल कवर in our entire syllabus of UX only, which is research, general research, personas, journeys, information architecture, why. अब अगर आप बाकी कोर्सेज देखोगे या ऑनलाइन चेक करोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो काम नहीं आती, जेन्युइनली काम नहीं आती है वो काम कब आती है? कि जब आप मान लो कि प्रोडक्ट में गए हो, प्रोडक्ट कंपनी में, मान लो आप टीम्स के लिए काम कर, ठीक है, तो उसमें भी आई हैव हैड अ वर्ड विद अ डिजाइनर ऑफ टीम्स, है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, who is the product manager also of Microsoft Teams. So the thing is, वो जितनी भी चीजें हैं ना, it is just to convince the clients हम ये सब कुछ करेंगे, और ultimately it boils down to the journeys, information architecture and the wireframes. Very honestly speaking, बाकी का ये जो भी सब ज्ञान है, ठीक है, कुछ हेल्प हो जाती है, बट बाकी का जो भी ज्ञान है, it is only for the clients to say that it's working. So रिसर्च वगैरह प्रोडक्ट मैनेजर करता है क्योंकि उसको कुछ नए नए अपडेट देना है, उसको अपनी जॉब बचानी है, राइट। तो वो रिसर्च करता रहेगा बैठे बैठे। सो एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर यू शुड नो इट। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपका अप्रोच अलग होगा, अगर आपको एजेंसी में काम कर रहे हो तो आपका अप्रोच अलग होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कवर एवरीथिंग, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। I'm just sharing an experience की live बस without research, वो भी कुछ आए स्टेज, but that depends project to project. Moving ahead, we have user interface. Now, user interface is on top of user experience. मतलब एक बार experience में wireframe बन गई हमारी, उसके बाद comes the user interface का part, जिसमें ये we design everything, we use micro animations in those graphics, we use everything, and then finally the prototype is just there, but I don't think it's oh. Hello, am I audible? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Oh, all right, so let me continue. Yes, I was talking about the user interface, right? That these are the 6 categories which is majorly part of the user interface.
where we first work on the grid system, the structure, the layout, everything. We finalize the colors, typography, graphics. Graphics maybe there are different sort of graphics, you know, whether it is illustration, photos, or if it is an illustration, what sort of micro animations are we going to use? Yeah? Then on scroll, what sort of animations are we planning to use? And then finally the prototype. So prototype is nothing but linking all your screens and call to actions and everything. Okay? So this is about the user interface जो आपको दिखता है. So हम आगे वो भी देखेंगे what it looks like. And of course we are going to use Figma, which is a tool. So this was, you know, very brief introduction as to what is UI UX, what are we going to cover in the entire course. Okay, we will be using Figma. So you can use the Figma app also. You can also use a web version of it. I would prefer the app because it's a little more seamless and you get more space compared to a browser. Secondly, uh, I hope everyone is having a laptop, you know, that they can work on. If not, you can, you know, go for a refurbished one or a quick laptop, you know, where you can buy at least an i5 so that it's easier and smooth to work on Figma also and to use the relatable graphics. So far, any questions, any doubts, feel free to ask. I'll take the questions, you know, for the next 10 minutes. So anyone, any questions? Not if it's okay if it's not regarding this presentation. Any questions that you guys have? 10 minutes only for the questions. Any sort of questions. It can be career related, it can be design related, it can be UX related, any sort of questions. Just open it up. ना जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करो. एंड अगेन अगर जो ऑलरेडी जिन्होंने बोला है कि दे आर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, आई वुड से भूल जाओ जो भी सीखा है वो. उसका रीजन ये है, अगर भूलोगे नहीं या अगर उसको साइड पे नहीं रखोगे, मैं जो भी सिखाऊंगा जो भी शेयर करूंगा वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हेल्प करे. अरे मैंने तो ऐसा सीखा था पर सर तो ऐसा बोल, अरे वो कोर्स में तो ऐसा बताया था पर सर तो ऐसा बोल, है ना. सो जो कोर्स में जो बताया था, आई टेल यू वेरी ब्लंटली अगेन. ठीक है, आई टेल यू वेरी ब्लंटली, और जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे ना, इट इज टू अर्न मनी. ठीक है, मैंने भी आप लोग से रुपए लिए, बट उसका पर्पस इज नॉट टू अर्न. आई एम डूइंग अ जॉब, a full-time job. Okay, I have 12 years of experience, so it is not that this course is for money. This course is to share knowledge, the practical knowledge that I have gained, which I would like to share. ठीक है, so ये कोर्स में मैं जितना भी कुछ बोलूंगा, it is all from the practical knowledge. It is from the practical experience. Whereas the other courses, they are all theoretical, they are all bookish. They're all bookish. So बुक पढ़ के अगर आप डिजाइनर भी बन जाते हो, still the implementation is a very different thing. You know, so that's why I said, अगर आपको practical knowledge gain करना है, forget the bookish knowledge. हाँ, भूल जाओ, गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ. I'm not saying it's wrong, mind well. I'm just saying आपको actual real life में शायद help ना आए. That's only that particular. So we have one person who does AI effect on the UI UX design job. It's a very good question. Yes, it does affects the UI UX design job, but in a better way. I'll tell you why. So जब हमने ये देखा, right, user research, general research, personas. So पहले हमने ये सब मैनुअली करते थे. So हम जाते थे गूगल पे, there are different websites जहाँ पर आपको बहुत सारे stats मिलते हैं. आप कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट स्टडी करते हो, आप बाकी जो स्टैट्स वाली वेबसाइट है स्टैटिस्टा और बहुत सारी है, आई फॉरगॉट द नेम आल्सो, बट देयर आर मेनी वेबसाइट्स हु प्रोवाइड स्टैट्स टू यू. फिर गूगल पे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, यू रीड आउट द ब्लॉग्स एंड यू देन डू द रिसर्च. एक हार्डकोर रिसर्च वैसे होती है कि अरे ये किसी ने रिसर्च की थी, उसने ये बोला था, उसमें से ये डिराइव हुआ था. यू हैव टू देन स्टडी द स्टैनफोर्ड का रिसर्च, हार्वर्ड का रिसर्च,
So all of that, ठीक है. Data.ai करके है, उसका research आपको सब पढ़ना पड़ता है, and that is how the actual research is done. But with the help of AI, you know, with the help of AI, that research has become so easy because AI is extracting data for you on your prompts. So it is going to be better for us because of the AI. Same is for the general research. Same is for the personas, because personas आप हमेशा बनाते हो. आप सोचते हो कि हाँ एक टारगेट ऑडियंस है ट्रैवल ऐप के लिए, मान लो, तो वो हो सकता है एक 18 साल का बंदा भी हो, या 24 साल की बंदी भी हो, एक मैरिड कपल भी हो, या एक 60 years के एक एजेड भी हो. बट इफ यू गो एंड यू आस्क एआई, वो आपको प्रॉपर पर्सोनास बना के देगा, जिसको आप ऑफकोर्स ऑल्टर कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू गेट अ वेरी फेयर अमाउंट ऑफ डेटा ready with. So AI is going to better our jobs, but it's not going to take our jobs. जैसे illustrations है, जो graphic designers है, वो दिन रात एक करके एक illustration बनाते हैं. But now with the help of AI, you can enhance those illustrations. You can create AI generated images based on the content of the website. So it is going to help us. It is not going to take away our jobs. I hope Ashwin I have answered that question. If you have anything more to ask on that, please do. Okay, so will you be providing the resources to study from? Can we write down what you teach, and also if there's anything important, can you let us know if we should write it? Okay, so Rohan, there's nothing honestly to write down. Because first thing, all of these lectures are recorded and you will be getting a link of playlist, which is going to be private only to you guys. So I request not to share it with anyone. Okay. So all the lectures would be uploaded on that particular playlist. I'll be sharing that with you. And honestly, it's more to do with the practical approach, So if you write it down, it's going to, help you to revise. But I would say if you have any doubts, just ask me again. It's okay. कभी भी पूछ लो. अगर आपको काम करते करते कोई इशू आ रहा है, ask me. अगर आपको पोस्ट द लेक्चर कुछ इशू आ रहा है, ask me within the lecture. क्योंकि आप लिखोगे नहीं. अगेन आप वो थियोरेटिकल अप्रोच में चले जाओ. लिखना है लिख सकते हैं. I'm not saying मत लिखो. But there is nothing that I say. I never honestly write down, because when you learn something practically वो imbibe हो जाए. ठीक है. एंड मैं एक ऐसा मेंटर हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, आई डोंट गिव आंसर्स सो इजीली. आई मीन डाउट्स के दे देता हूँ, बट इफ यू गाइज आस्क मी सच क्वेश्चंस दैट इसका क्या लेआउट होना चाहिए, आई वोंट गिव यू दैट अपफ्रंट. बट बिकॉज अगर मुझे ही बताना है तो आपकी थिंकिंग कब डेवलप होगी, आपका थॉट प्रोसेस कब डेवलप होगा. But I'll still guide you how to do that. I mean, how to create that thought process is something what I will guide you to. Okay, I'll tell you what are the steps you should take so that you understand or what layout you should use. So मैं आपको कैसे सोचना है. So it is always easier to give someone a job, okay, so that he earns for himself rather than giving him food every day. So I am of the approach कि मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको आगे हेल्प करेगा without my help also. That is my understanding, that is my thought process about this course. That it मैं ज्यादा स्पून फीड नहीं करूंगा, क्योंकि स्पून फीड करने से फिर वो आदत लग जाती है, एंड स्पून फीड करने के बाद आप पैरासाइट बन जाते हो. आपको फिर हमेशा लगता है अरे सर है ना बता देंगे, सर है बता देंगे. आई एम हियर टू गाइड, राइट. आई एम नॉट हियर टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, क्योंकि जॉब पे जाके तो आपको ही काम करना है ना. तो थॉट प्रोसेस कैसे बनाना है, थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट करना, आई एम ऑलवेज देयर. Any more questions? Others? We still have 5-7 minutes for the questions. Anyone? अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही क्वेश्चन है, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. Strange. The more you ask, the more you learn. And don't think ये तो बहुत silly doubt है या
ये तो बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है। लोग मेरे बारे में क्या पूछेंगे? कोई कुछ नहीं पूछेगा या कोई कुछ नहीं सोचेगा। Unless you clear your doubts, you are going to harm yourself. So what will be our weekly study? Yes, it's going to be Monday, Wednesday, and Friday, 8:30 to 10. Okay. Any other doubts? Ashish, Abhya, Akshay, Anjana, Bhavika, Harshita, Maitri, Mehul, Mohit, Rishi, Pratham, Riya, Stuti. No doubts? Okay, cool. I had a question, but you already answered. Okay, all right, Ashish. ठीक है. So introduction is done. We'll start, getting our hands dirty a little bit on Figma. So I would request every one of you all to, get started with your Figma. जिसका account है नहीं है, create your accounts, raise your hands once you're ready with your Figma, and then we'll get started as to, understanding a little bit of it. Great. So जिसकी भी ready है, just keep your hands raised. और जिसका बाकी है, they can get ready and I hope मैं जो बोल रहा हूँ लोगों को समझ में आ रहा है. या बस रैंडमली बस अब कोर्स ले लिया है, रुपए दे दिए, अब तो सीखना ही है, ऐसा मत रखना. अगर समझ में नहीं आ रहा है, आस्क मी इमीडिएटली. अगर लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है, टेल मी. आई विल स्विच माय लैंग्वेज एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इट्स फाइन. आई एम ओके टू डू दैट. अनलेस यू गाइस अंडरस्टैंड, आई एम ओके टू डू. सो जिसको ऑलरेडी फिग्मा आता है तो बोर हो जाए, ये वाले पॉइंट या ये वाले so Riya has a question. I can something. Yeah. So whatever we do in the lecture, everyone has to do, irrespective whatever you are doing apart from the course. Okay. So you have to follow what we are going through in the course. Right. So let's start with a new design file. We'll start with a draft. तो आई एम श्योर अब तक सबने फिग्मा थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही लिया होगा. ठीक है, बट आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ इट टुडे. सो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग ऑलवेज, जो बहुत सारे डिजाइनर नहीं करते हैं, प्लीज रीनेम योर फाइल्स, प्लीज. ठीक है, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल हैबिट. ठीक है, that to rename your files, so please do that. Don't keep it untitled. First lecture. Okay. Then just knowing few of the tools, जिसका first time है, these are called as the artboard. तो हम जो भी डिजाइन बनाते हैं, हम फ्रेम में बनाते हैं. ठीक है, फ्रेम की साइज वगैरह I'll let you know. These are the basic shapes that we are going to use. So अगर देखा जाए टेक्निकली, ये जो शेप है, इसी शेप से सारी डिजाइन्स बनती है, which is nothing but the rectangle, line, arrow. घुमा फिरा के यही सारी शेप से बने. पेन टूल, if you know it, you know it. आपको कैसे यूज करना है. It is mainly to do on the illustration, on the graphics, etc. Nothing to do about, the basics of it. या फिर अगर आपको एकदम डिटेल में कोई illustration चेंज करना है, ग्राफिक चेंज करना है, तो आप कर सकते हो. But I don't think we'll need it for me. This is again the most important text. आप को यूज करके टेक्स्ट यूज कर सकते हो.
plugins, shortcuts, widgets. Anyone can explore this online. So as I mentioned, this is not a Figma course. It's more a UI UX course. But I'm just giving a brief. Hand tool जो आपको space से भी आ जाता है. So आपको space दबा के रखना है and you have to move the screen, artboard. Control दबा के आप अपना माउस का जो व्हील है उससे आप zoom in zoom out कर सकते हो. And then you can hold the space and move around. This is the command which is used for the collaboration. So अगर आप client को prototype भेज रहे हो, ठीक है, so client can comment on it, or if internally अगर आप एक team में काम कर रहे हो, you can comment on the screens. ठीक है. अब as I mentioned, we are more to do with the fundamentals. ठीक है. So start हम करेंगे एक बहुत ही important चीज से, which is a window and a viewport. ठीक है. Now let me share one screenshot with you on my Figma. Alright, so ये मैंने अभी हमारा जो I'll just delete that. मैंने हमारा ये जो स्क्रीन है, ठीक है, so इसका अगर आप रेजोल्यूशन देखो, it is 1920 by 1080. Of course मैंने इसको स्निपेट से स्निप किया इसलिए 2-4 पिक्सल कट गए, but it is 1920. Oops, sorry. 1920. ठीक है, and इसको हम 1080. So basically this is my window. ठीक है, विंडो क्या है? So अगर मैं मेरे पीसी का रेजोल्यूशन देखूं, ठीक है, और अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट लूं इस हिसाब से जैसे अभी मैंने किया है, so उसकी जो हाइट और विड्थ आती है, width is 1920 pixel and height is 160. This is our window size. ठीक है, this is our window size. Everyone can raise down their hands so that अगर आपको कोई डाउट हो, you can raise your hands. So you can ask the doubts when I call your names. Yeah, I'll just lower. Look closely to this same screenshot. ठीक है, तो होगा क्या? Okay, so let me know once I'm audible. Am I audible now? Yes, sir. I guess this. Okay, I'm audible, right? Okay, perfect. So sorry for that. I think there's some internet connection today issue today with the internet. Okay. So what I was saying is that when I see this is my entire window. Okay. तो लोग क्या करते हैं पता है, जब वो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, एक आर्टबोर्ड साइज लेंगे एंड जो डिजाइन बना रहे हैं दे कैन इजीली रिलेट टू दिस, जिनको पता है कि डिजाइन कैसे बनती है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक साइज ले लेंगे. मान लो मेरा डेस्कटॉप का साइज है 190 करेक्ट. वो ये बनाएंगे, फिर वो शेयर करेंगे इसको प्रोटोटाइप, राइट. सो इसमें जाके वो कुछ बना लेंगे डिजाइन वगैरह एंड व्हाट दे विल सी इज कि वाह अच्छी डिजाइन है यार, ये तो है ना, वो डिजाइन लिया मानो सब एक बेसिक से कुछ एक लेआउट बनाते हैं. यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेलकम टू योर कोर्स. So sorry for that. That's my 3-year-old son. He loves to, sit with me on the system and see as to what do I do. But today is not allowed. So sorry for that. Okay. So
वी हैव दिस. अब हम यहाँ पर कोई ग्राफिक डाल देते हैं. ठीक है, कोई तो ग्राफिक डाल दें. ऑलराइट. कूल. अब ये जाके हम यहाँ देखेंगे, अगर तो हमको लगता है यार ये तो सही लग रहा है. बट इमेजिन नाउ, लुक एट योरसेल्फ कि जब आप एक्चुअल रेजोल्यूशन में विंडो पे देखोगे, इट विल मेक सेंस टू यू. बट व्हेन अ यूजर विल सी दिस ऑन हिज ब्राउजर, तब उसको कैसा दिखेगा. राइट, लेट मी शो यू. तब उसको ऐसा दिखेगा. राइट. व्हाई? So let's go back to our screenshot. So if you see this, correct, ऊपर हमारा टास्क बार है, सॉरी ऊपर हमारा नेविगेशन बार है, यहाँ पर हमारा एड्रेस बार है विच ऑफ द ब्राउजर. राइट. यहाँ पे मुझे यहाँ इतने पिक्सल चले गए. आई हैव द टास्क बार एट द बॉटम, अगेन 100 पिक्सल चले गए. So if I see what is the exact resolution of my viewable area in a browser, okay, see 1920 by 950. So अगर हम हमारा इसको भी जाके चेंज करते हैं वापस, 950, still you see क्या दिखता है हमको, आधा दिखता है. Correct. So that's why the very first thing as a designer what we have to focus on is the viewport. इसको हम क्या बोलते हैं, we call this as a viewport. viewport बहुत important है. ठीक है, क्योंकि अगर आप viewport पे फोकस नहीं करते हो, अगर आप रैंडमली डिजाइन बनाते हो, होगा क्या, जो फाइनल आउटपुट जो डेवलपर बना रहे, इट वोंट मेक सेंस. ठीक है. हाँ, इसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट इतनी ही है. ठीक है, आपकी वेबसाइट इतनी है, आई एम नॉट सेइंग. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू अलाइन योर फोल्ड्स इन अ वे, एटलीस्ट द फर्स्ट फोल्ड, बाकी का स्क्रॉल पे आए चलेगा. द फर्स्ट फोल्ड इन अ वे दैट इट इज प्रॉपरली विजिबल. यू नो, now if you see this, it makes sense. Correct. So for this always take a ruler और 9, जैसे अभी मैंने 1920 लिया है इसलिए मैं 950 ले रहा हूँ. एक्चुअल जो होता है विल सी टुमारो इन आवर फर्स्ट लेक्चर, ये ना कैसे क्या करना है. सो इफ आई सी दिस, यू नो, आई नो कि हाँ चलो यहाँ से दिस इज माय सेंटर, दिस इज माय सेंटर, देन दिस लुक्स परफेक्ट इन माय फर्स्ट फ्लोर. देन उसके बाद स्क्रॉल पे जो होगा, ठीक है, दैट्स फाइन. क्योंकि इसके बाद तो मैं जाके मेरा आर्टबोर्ड बढ़ाऊंगा, क्योंकि वेबसाइट का लेंथ बड़ा होगा, है ना. बट फर्स्ट फोल्ड शुड बी दिस. लेकिन फर्स्ट फोल्ड के बाद भी अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, जैसे अगर मान लो कि मैंने इमेज इतनी बड़ी ले ली, या मैंने कंटेंट यू नो और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया मैंने कंटेंट, एक लाइन में भी है ऐसे, तो भी यूजर को कहाँ दिखने वाला है. एक फोल्ड में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कट रहा है. सो दैट इज व्हाई नोइंग योर व्यू पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसलिए आपको व्यू पोर्ट जानना बहुत जरूरी है. अब इसके कुछ स्टैंडर्ड ही है वेरिएबल्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैंने 1920 लिया था इसलिए उसका 950 है. बट हम जो भी डिजाइन बनाएंगे ना, अगर ये किसी को लिखना है, यू गाइस कैन राइट, हम जो भी डिजाइन बनाएंगे 1440 बाय हाइट कैन बी वेरिएबल. मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट का साइज लिख रहा हूँ. ठीक है, इट वुड बी 1440 बाय 750. ठीक है, 750 है हमारी हाइट. रीजन बीइंग, अगर आप आपके आर्टबोर्ड का साइज देखोगे वापस, राइट, इट्स 1440 बाय, ये जो दिया है इन्होंने साइज, दिस इज फॉर दी मैक. ठीक है, विच डज नॉट वर्क फॉर विंडोज, क्योंकि मैक में हाइट्स बड़ी होती है इवन फॉर लैपटॉप्स. ठीक है, सो इसलिए ये हमारे आइडियल साइज जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन अगेन विंडो साइज, वो 900 होती है. So we ideally, you know, subtract 250 pixels, you know,
250 pixels from our actual resolution. ठीक है, so हमारा आइडियल viewport size would be 750. अब तक किसी को कोई डाउट? आई सी वन हैंड रेज, रोहन. So, sir, different viewport sizes will also depend on the kind of, obviously since we have desktop presets, does it anyhow matter because of the bezels of the device? Will that No. matter by any chance? No, because the resolution is after those bezels, no? Okay. So it is not the inches of the screen, it is the resolution of the screen. Okay. Yeah. So the viewport has to be always, we have to divide to minus 250 from the breadth area, right? Height. Okay. 250 from the height. From the height. Okay. All right. Understood. I see this. So for 1440, my viewport would be 750. ठीक है, अब ये ना किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, but as a designer, design it for 750 so that it can accommodate in all the screens. ठीक है, तो अगर कोई मैक वाला देख रहा है उसको ये नीचे का थोड़ा पार्ट दिखेगा, इट इज कंप्लीटली फाइन. ठीक है, so I'll give you an example of Apple. So let me pull up this. So अगर मैं एप्पल का स्क्रीनशॉट बताऊं, so if you see this, right? So मेरे रेजोल्यूशन में आपको इतना ही ये नीचे का पार्ट दिख रहा है. ठीक है, लेकिन मैं इसको जैसे ही और बड़े इसमें देखूंगा पिक्सल्स में, या फिर मैं इसको और छोटे पिक्सल में देखूंगा तो वो वेरी करेगा. गिव यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट. लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड रिज्यूम. Yes. So now if you see this, right? मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक सरफेस let me add the responsive. Yes. So if you see this, right? So मेरे स्क्रीन में जितना मुझे दिख रहा था, करेक्ट, उससे अभी कम दिख रहा है. And if I lower this down even more, say 1366 by 768, this is the resolution. So 768 से और कम होगा. So I'll only see around 650 or 600 pixels. So you see इतना. So अगर जिसका resolution 1366 है, they can try on their system. उनको ऐसा कुछ दिखेगा approximately. ठीक है. So this is why viewport, knowing the viewport is very important. ठीक है. Clear? Any doubts? Anyone? Sorry. Any doubts? Anyone? नहीं? Alright. ठीक है. ठीक है. So ये एकदम ही first basic step है. ठीक है. In our entire course, knowing the viewport. या मोहित, आपको कुछ बोलना है? No sir, no sir. Alright. So ठीक, no worries. ठीक है. So आज मैं ज्यादा bombarding नहीं करूंगा. ठीक है. But also one more thing just before I forget. अपना जो कोर्स है, it won't be like कॉलेज कोर्स और स्कूल कोर्स जहाँ पर एक सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, एक कंटेंट का ये दिया है, उसी फॉर्मेट में फ्लो होगा, ऐसा नहीं है. वी विल कवर ऑल द पॉइंट्स दैट आर मेंशन. ठीक है, बट इन बिटवीन, मतलब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे
और काम करते करते ही विल कवर दोस कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज दैट वे इट इज ऑलवेज इजियर टू लर्न। ठीक है, वरना ऐसा होगा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, फिर आप चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भूल जाओ। सो इसलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल लर्न करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, एंड वी विल लर्न इन पैरेलल। सो डोंट गो विथ द फ्लो दैट आई हैव मेंशन ऑन द वेबसाइट और आई शेयर इट विथ यू गाइस। इवन जो स्केड्यूल भी मैंने जो दिया है वो शायद ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट दैट वी डू, लेकिन कवर हम सब कुछ करेंगे, बी रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, इनकेस अगर मुझे एक दो लेक्चर और एक्सटेंड भी करना पड़े, ठीक है, वी विल डू दैट आल्सो, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन डोंट स्टिक टू दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग कि ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो होगा ही, ये कवर नहीं होगा, सब होगा कवर, डोंट वरी। ठीक है, ऑल गुड एवरीवन? Yes, sir. ऑलराइट, चलो परफेक्ट। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे। ठीक है, आप लोग का टास्क क्या है? वी विल मीट अगेन टुमारो which is 8:30 to 10। हम अगेन इस पे ही प्रैक्टिकल चीज पे कंटिन्यू करेंगे। सो अब तब तक आपको करना क्या है, घर पे फ्री नहीं बैठना है, जो फ्री है वो ऑफ कोर्स, जो जॉब करते हो तो जॉब करेंगे, बट इन केस इन बिटवीन यू गेट सम टाइम, ठीक है, आई विल बी शेयरिंग सम प्लेलिस्ट। जिसको फिग्मा नहीं आता है, इट इज फॉर देम। जिसको फिग्मा आता है दे कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क, वो अगर कल टाइम स्पेंड ना करे तो भी चलेगा, बट जिसको फिग्मा नहीं आता है, आई एम शेयरिंग फ्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस दोस प्लेलिस्ट। ठीक है, ब्रश अप दोस फिग्मा का स्किल्स। आपको जो रैंडम बनाना है बनाओ, वो लोग जो भी ज्ञान देंगे इग्नोर, जस्ट डिजाइन समथिंग। ठीक है, सो उसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, यूज फिग्मा का ट्यूटोरियल्स दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। डू वन थिंग, चलो इसको ऐसा करते हैं, देर आर यूट्यूब का ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। ठीक है, use that. I am going to give you guys, every one of you guys, a screen to replicate। ठीक है, आप लोगों को कल तक जितना रेप्लिकेट आप लोग कर सकते हो, आपको उतना रेप्लिकेट करना है, जितना क्लोज पॉसिबल हो, जैसा भी पॉसिबल हो। किसी का अगर सेम नहीं बन रहा है, नो डाउट, आपसे जैसा बन रहा है बनाओ, बट मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू डू द असाइनमेंट। ठीक है, आप लोग को मैं एक स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजूंगा। You guys have to replicate that screen as it is, जितना closely possible हो, जितना possible, and you have to share it tomorrow in the lecture। ठीक है, so let me share that screen with you guys कि आप लोगों को क्या बनाना है। Sorry. So I am sharing one website address in the chat। ठीक है, अब ये वेबसाइट, इसमें अब मैं बता दूं, let me share my screen। हाँ, ये जो है, राइट, ये जो आपको दिख रहा है, यूज दिस
ये तो ठीक है, ये तो आप बना सकते हो। दिस, ये है ना, एक इंफोग्राफिक है, एक लॉटी इमेज है, ये आपको नहीं बनाना है। इसके जगह आप बस इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दोगे चलेगा, ठीक है। बाकी सब आपको बनाना है, जैसे यहाँ लोगोस डाल सकते हो, ये अगेन ये सब आप बना सकते हो। एनिमेशन नहीं बनाना है, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट डाल सकते हो इसका, दैट्स फाइन। पर ये सब आपको रेप्लिकेट करना है। यस रोहन। सो सर ये पूरा जो पूरा वेबसाइट है उसको पूरा जैसे जो लेआउट है वैसा रेप्लिकेट करना है ना अपने हमें? यस, आपको एज इट इज ये वेबसाइट की डिजाइन कॉपी करनी है, ओके ठीक है। पूरा जितना पॉसिबल हो उतना। ठीक है सर। एक और डाउट था, हाउ कैन यू हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ व्यू पोर्ट। सो देयर इज नो रेशियो ऑफ व्यू पोर्ट, जो भी हाइट होती है उससे आप 200 से 250 पिक्सल माइनस कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जैसे अगर 1366 है, तो उसमें अगर आप 250 पिक्सल कम कर दोगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो उसमें हम 200 पिक्सल ही कम करते हैं। 768 जो है उसमें आप 200 पिक्सल कम करते हैं। बाकी जो भी है 1440 by 900, 1920 by 800, उसमें आप 200 पिक्सल कम कर सकते हैं, 250 पिक्सल कम कर सकते हैं। सो यू एक्चुअली माइनस 250 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इफ द रेजोल्यूशन इज 1366 माइनस for height 768 minus 1. Okay, this is the basic ratio. Yeah, Aditya. That's good, but I would say again replicate this particular website of pitch. Okay, okay, cool. So any more doubts? No sir, none from my side. All right, perfect. So we'll meet tomorrow 8:30 p.m. and eager to see what you guys design. जैसा जिससे जो होता है डिजाइन करो। कोई ये मत सोचना कि सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे या बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वी आर ऑल लर्निंग, ठीक है। कोई भी बचपन से सीख के नहीं आया था, दिस इज अ प्रोसेस, और इवन आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। सो डोंट वरी, नो वन इज गोइंग टू जज यू, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। यस रोहन एंड आदित्य। सर वो जो वीडियोस और ये है जो एनिमेशन है उनका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके डालना है? यस यस, ठीक है सर, ठीक है। आदित्य आपको भी कुछ डाउट? Okay. All right. So we close our lecture here today, and I'll be sharing the recording now over the group. So if in case anyone has any doubt, वो lecture भी go through कर सकते हैं, या you can ping me in person. All right. Thank you so much. Have a good night. Sleep tight. All right. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye. Thank you, sir. हेलो सर। सर आप यूट्यूब वीडियो शेयर करोगे, मतलब कैसे बनाना है स्टार्टिंग ट्रायल के लिए? Sorry.
आपकी आवाज एको क्या रही? हेलो हाँ आप बोलिए अर्षित। सर, आप यूट्यूब वीडियो या कुछ शेयर करोगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है? ये जो मैंने अभी असाइनमेंट दिया वो हाँ सर, मतलब उसी के मतलब हिसाब से, मतलब कि क्या कैसे करना है, कुछ आइडिया के लिए, क्योंकि मैंने कभी फिग्मा यूज नहीं किया अभी तक। हाँ करेक्ट। सो इसलिए मैंने बोला कि फिग्मा के जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है मैं भी कुछ ग्रुप पे डाल दूंगा, वो देख के आप फिग्मा सीख सकते हो और उसके साथ फिर आपको ये बनाना है। उसमें फिग्मा में जो वो लोग बोलेंगे ना जो ट्यूटोरियल में, वो मत बनाना। इंस्टेड आप ये वेबसाइट को रेप्लिकेट ओके सर, थैंक यू। करें। थैंक यू।